જઈ રહેલ છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર માટે હજુ પણ આ પડાવ એ પરિવર્તનની શરૂઆત છે. સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે કે આ ઝુંબેશને વધુને વધુ સફળ બનાવી શકાય. ખુલ્લામાં શૌચક્રિયા માટે જતા પ્રત્યેક વ્યક્તિની વર્તણૂકમાં સંપૂર્ણપણે બદલાવ લાવી શકાય. ખુલ્લામાં શૌચક્રિયાને અસ્વીકાર્ય બનાવવા માટે સમાજના મહત્તમ લોકો આ ચળવળમાં જોડાય અને વધુ શૌચાલયના નિર્માણ માટે માંગ વધે. જાજરૂ બનાવો ઝુંબેશ અંતર્ગત શૌચાલયના બાંધકામ માટે એનજીઓ, સીએસઓ, સીએસઆર, એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓ વગેરેનો શ્રમદાન રૂપે સ્વૈચ્છિક સહકાર મળે. પ્રજામાં સ્વયં શિસ્ત કેળવાય અને સમુદાયના સભ્યો દ્વારા નિગરાનીમાં વધારો થાય. પૂજ્ય બાપુની 150મી જન્મ જયંતિ સુધીમાં આપણો દેશ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લામાં શૌચમુક્ત જાહેર થાય, જે હશે બાપુને સાચી ભેટ, સાચી શ્રદ્ધાંજલિ. नमस्कार, स्वागतम। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय भाई रूपाणी और भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी एवं गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल प्रदर्शनी का उद्घाटन कर थोड़े ही क्षणों में यहां हमारे बीच पहुंचेंगे और इसके साथ ही हम इस परिषद का प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम इस परिषद का विधिवत प्रारंभ करें, यहां प्रेक्षागार में उपस्थित आप सब महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया इस कॉन्फ्रेंस का औचित्य और गरिमा बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। आप अपने मोबाइल फोन्स या तो स्विच ऑफ रखें या उन्हें वाइब्रेशन मोड पर रखें।
शुरू हो चुकी है। 500 शहर एक सर्वेक्षण। स्वच्छता के आधार पर शहरों को आंका जाएगा। सर्वेक्षण के कुछ सवाल। आपका शहर कितना साफ है? क्या शहर में कूड़ेदान है? क्या रोज कचरा इकट्ठा होता है? कचरे का निपटारा कैसे होता है? क्या आपके घर में शौचालय है? शहर में जन सुविधाएं हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से। क्या आप तैयार हैं सफाई के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए? स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800-267-2777। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 500 स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल कल कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान विजय रूपाणी जी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी और महानुभाव बस कुछ ही क्षणों में इस प्रेक्षागार में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आप अपना स्थान बना लें। सेमिनार हॉल 3 में भी बैठक व्यवस्था की गई है, आप उसमें भी अपना स्थान ले सकते हैं।
Namaskar, good evening. On behalf of Government of India, we welcome you all on the inaugural ceremony of 9th edition of Urban Mobility India Conference and Expo. हमारा परम सौभाग्य कि आज इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी व साथ ही भारत सरकार के शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मान्यवर श्री वेंकैया नायडू जी, गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री नितिन भाई पटेल एवं अतिथिगण। आइए जोरदार तालियों की गूंज से महानुभावों का अभिवादन करें। कार्यक्रम की शुरुआत मनुष्य गौरव गान, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का अति प्रिय गान है और मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को उजागर करता है, उससे करेंगे। आइए शुरुआत करें मनुष्य गौरव गान से। धरती की शान, धरती की शान तू है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को छोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमृत से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। के लाल तेरा नीर सा हाल, तेरी दृष्टि में तांडव का ताल है। मुझको तू जान, मुझको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि
गुरु सावतिमान पवन साधु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, 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 मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। अतिथि सत्कार की भारतीय परंपरा को बरकरार रखते हुए अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में पधारे महानुभाव एवं आमंत्रित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें। अनुरोध है गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय भाई रूपानी से कि आप भारत सरकार के शहरी विकास एवं शहरी आवास व गरीब उपशमन मंत्री माननीय श्री वेंकैया जी का स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पण कर करें। मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय भाई रूपानी का स्वागत भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री राजीव गौबा पुष्पगुच्छ अर्पण कर करेंगे। गुजरात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान नितिन भाई पटेल का सत्कार भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिक सचिव श्री DS मिश्र करें। आज हमारे बीच प्रेसिडेंट कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट डॉक्टर चैंग वुन ली उपस्थित हैं। आपका स्वागत करेंगे मेगा के MD महोदय श्री IP गौतम। अर्बन मोबिलिटी इंडिया के इस परिसंवाद का विधिवत प्रारंभ करने हेतु दीप प्रागट्य के लिए निमंत्रित करते हैं मंचस्थ महानुभावों को। यदैव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषद तदैव वीर्यवत्तरम भवति। अर्थात जो कार्य श्रद्धा पूर्वक उपासना पूर्वक होता है वह कार्य सफलता ही प्राप्त करता है। Let us all pray to Almighty. This conference will show new path to mankind for planning mobility for cities sustainability. धन्यवाद महानुभाव आप सबका। आज के इस परिसंवाद में उपस्थित मंचासीन महानुभाव एवं सभी आमंत्रितों का शाब्दिक स्वागत करने हेतु निमंत्रित करते हैं श्री राजीव गौबा, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप वेलकम एड्रेस से सबका स्वागत करें। Honorable Minister for Urban Development, Government of India, Honorable Chief Minister, Gujarat, Honorable Deputy Chief Minister, President, Korean Transport Institute, Mr. Chang Woon Lee, my colleagues from the Ministry, from senior officers of the State Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's my privilege
to welcome all of you to this annual Urban Mobility Conference and Exhibition. The annual event this year is significant and different from the previous events in two respects. First, that this is the first time, this is the 9th annual event, and it is the first time that it is being held outside Delhi. All previous events have been held in Delhi, and it was our Honorable Minister's direction to go out and organize this in a state, and we decided to hold it in Gujarat, in Ahmedabad. I think it's in the fitness of things that we go out and organize such events in the states. We are a federal country. Not only a federal country, but we are a federal country of continental dimensions. Our states, many of the states are bigger than many countries, and we have so many mega cities, growing cities, and the urban planning, including urban transportation and implementation of infrastructure projects, including transportation projects, is in the domain of the states and the cities. So the action, real action, is in the states. So I think this is a good trend that we are setting, and we hope to continue with this, though it's difficult to step out of Delhi and from the various preoccupations which the Honorable Minister and many of us have in Delhi. I think it is a recognition of the reality that real action is in the states, moving to the states. It's also significant for another reason, that over the last 2 years, Government of India has recognized that urbanization, the Honorable Prime Minister has said himself, is not just a challenge, but an opportunity, and therefore it has launched not one or two, but 3 very important missions for urban transformation, and that urban transformation cannot be complete unless we devote adequate attention to the aspect of urban transportation also. So our job in the ministry, as we see, is to bring all the stakeholders together, expose them to new concepts and best practices in urban planning and transportation. I think we all know that we are in the midst of a very, very major demographic transition. We are still growing in numbers, in population. Age profile is extremely youthful, and we are rapidly urbanizing. We have 375 million people living in our cities, and that number is going to double by 2050. So we have to plan and build infrastructure, including the transportation infrastructure, on a very, very massive scale, and it has to be a sustainable infrastructure. So I think we need to discuss all these issues, deliberate these issues, how to plan for sustainable transportation infrastructure, how to encourage public transport systems and discourage use of private vehicles, for example, and make our cities build their capacity so that they can examine through rigorous analysis various options and choose the most cost-effective options, and also to integrate planning and transportation so that people live closer to their workplaces and the needs of commuting are minimized. I think all these issues will be discussed at length in the sessions that will follow. And we have Mr. Chang-Moon Lee to deliver the keynote address, President of the very well-known, renowned institution, Korean Transport Institute. We are privileged to have him here. We in the Government of India and the states, we have been collaborating with this institution. Many of our officers have been visiting this institute every year and benefiting from the work which is being done there. So we look forward to very constructive and fruitful deliberations. I thank all of you for having taken time out to attend this event, and I once again welcome all of you. Thank you. Thank you, sir. It's an immense pleasure for all of us that we have with us a distinguished personality, Doctorate in Transport from France, and President of the Korea Transport Institute,
Dr. Cheng Won Lee. He has served as a member of multiple committees under Korea's Ministry of Land, Infrastructure and Transport. May we now invite Dr. Cheng Won Lee for the keynote address, please. PPT 여기 있습니다. 요거로 오케이. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. It is a great honor for me to have a chance of keynote speech at this conference with all of you participants. First of all, I would like to express my special thanks to Honorable Minister Shri Venkaiah Naidu and Shri Rajiv Gauba, President of Institute of Urban Transport, and Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Rupani. Here now, let me begin to talk about excuse me, we will have to I prepared some presentation. લેનોવો આવ્યું પછી લેપટોપ ચેન્જ કરવું
उसमें कनेक्ट होगा. दिस इज आवर माउस. बट ये कैसे चेंज करेगा यहाँ पे? तो जब वो वहीं पे कनेक्ट करते हैं. इसका निकालो, इसका निकालो. ये प्लीज वेट. एक मिनट, अब आएगा जल्दी. हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं. और अब आज के इस अवसर पर कुछ प्रकाशन जो कि प्रकाशित किए जा रहे हैं उनके विमोचन विधि करने हेतु निमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री वेंकैया नायडू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री को. Electric rickshaws in Indian cities, status and scope for improvement, a study done by Institute of Urban Transport. निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आप इस स्टडी रिपोर्ट का विमोचन करें. Generic operations document for Unified Metropolitan Authority and Urban Transport Fund Bill prepared as part of the World Bank UNDP supported GF Sustainable Urban Transport Project, उसका भी आज यहां विमोचन करना है. Generic Operations Document for Traffic Management and Information Control Center and National Urban Transport Helpline. Guidance Document of Non-Motorized Transport, Public Bike Sharing Scheme and Transit-Oriented Development. Guidelines and Model Contract for City Bus Private Operations, prepared as a part of the World Bank UNDP supported GF Sustainable Urban Transport Project. आज के इस अवसर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि साइन होना है. द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंडिया, अ प्रोफेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट एंड एनकरेज द स्टेट ऑफ द आर्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट बाय डिसमिनेटिंग नॉलेज थ्रू जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, and the Korea Transport Institute, an official research agency for the government of the Republic of Korea, with the mission to provide recommendations and alternatives for the nation's transport policy and create an optimal transport system through specialized research and technical innovations. This MOU will be signed between Mr. Cheng Won Lee and Secretary Urban Development, Government of India.
स्क्रीन पे ना रखे. Don't put it on screen, just tell them. कनेक्ट कर दे रहे हैं, बट टेस्टिंग ना कर रहे हैं. Another MOU between SEPT and COTI is to be signed in presence of the dignitaries. Shri Bimal Patel from SEPT would sign the MOU. We would request President Korea Transport Institute, Shri Cheng Woon Lee, to please continue with the keynote address and the presentation. So, 그건 안 돼? 안 돼? 한번 테스트 해보죠. Okay. It's very nice to see you again. Let me continue. Next page. Here now, let me begin to talk about transport challenges with ICT advancement, more specifically, how advancements in ICT technology affect our transport policy. Firstly, I would like to mention a little about today's developing countries' transport situation. They are suffering from serious urban transport problem due to earlier motorization with significantly rapid urbanization. The rate of global urbanization was over 50% in 2008, and it is predicted to reach over 70% in 2050. For the most part, urban transport problems are already at critical level today in many developing countries. Nevertheless, earlier motorization in developing countries is aggravating the situation without proper measures. When it comes to transport mode transition in developing countries, bike use was prevalent in the past. Nowadays, motorcycles are replacing bicycles and are filling the street. With an increase of national income, these motorcycles would be replaced again with passenger cars. This will give us a chaos on the urban environment. Then what should be considered as timely appropriate solutions for this situation? Here I am going to propose 3 issues for that answer. Firstly, I'd like to emphasize that our efforts should be focused on promoting well-timed urban public transport system centered on transit-oriented development policy. The second one is that ICT technologies should be introduced in order to solve urban transport issues as much as possible. Thirdly, I would like to suggest the early realization of a green transport system.
It's needless to say that building low-carbon green transport system is important and urgent. If we make such efforts for green transport system earlier, we could save significantly social cost in the future. Among these three alternatives, today I am going to focus on the application of ICT technology to the public transportation. Now, I would like to introduce some Korean case where public transport could improve its attractiveness and competitiveness by integrating ICT. What has ICT changed in public transport in Korea? First of all, it is silence. You don't need to hear loud chatting voices in public transport modes. They don't make noise in a metro or bus anymore because they are very busy with concentrating on their mobile phones or smart devices. So we can enjoy now very quiet atmosphere of public transport. I don't know whether this change is positive or negative for our lives of humanities. Anyway, I can say that it is noise cancelling effect of ICT development. And also, you don't have to clean the waste of newspapers out from the metro anymore because they get information in real time from their smartphone on hand. As you know well, public transport reform in Seoul, in Korea, was successfully done in 2004. Bus transportation has improved as the BRT system offers speedy and convenient bus services. And advances in ICT have made it possible to conveniently use transport cars. The users of these cars feel further satisfied as they can benefit from transport discounts. After the reform, public transport ridership in Seoul has continuously increased as public transport is getting more attractive and competitive, resulting from improved punctuality and better fare system. Besides, there is another important factor. It is just the utilizing time. Time spent in public transport is no longer wasted time, as it is now used for entertainment as well as work, thanks to ICT advancement. Third, public transport riders are now spending their time in rather productive and enjoyable ways. They could check emails and respond or engage in entertainment such as watching TV programs or playing games with their mobile devices. That is possible because almost public transport in Korea provides ICT services. Korea is one of the front runners in the sense that transport facilities as well as buses, metros, and trains are well equipped with free and very speedy Wi-Fi. ICT technology has changed the transport systems and services. ICT pushes conventional transportation to move to the next generation of transport systems and services, such as smart ITS, which uses existing mobile communication networks as sources of big data without additional construction costs for many sensors and information media and devices. Therefore, we need to develop smart ITS so that we can make the transport systems cheaper in construction, simpler in management, and easier to the general public. It is going to be a new strategy for transport investment with ICT technology. For another example of smart ITS, as an important policy initiative, ICT advancement is making conventional transportation move to the mobility integration system or smart mobility.
Under a recent worldwide paradigm of sharing economy, mobility integration represents one-click app service. It can provide any user with an integrated trip planner on demand by connecting all transport modes and facilities in utilizing ICT on the mobile phones. This integration is a customized service through a mobile platform connecting all transport modes from door to door, such as bus, subway, taxi, car sharing, or public bike system, and so on. The service has a function of reservation, information, and payment during all travels into a simple smartphone application on hand. So it can be also very effective for increasing public transport use, especially in combination with sharing economy, such as car sharing or public bike system. In terms of mobility integration service, my institute court is actually preparing to develop its pioneering project in Jeju Island of Korea. It is called JIMO, which stands for Jeju Integrated Mobility on Hand. Jeju is famous for being one of the most beautiful islands in the world, located in about 100 kilometers south of Korean Peninsula. Jeju Island is also famous with a carbon-free island project in Korea. They are actively promoting electric vehicles policy for targeting year 2030, with 100% of vehicles to be replaced by electric vehicles to fulfill tomorrow's promise of the carbon-free island. Lastly, let us think about a slow city transport system for developing countries by harmonizing fast transport and slow travel. For the last 50 years in Korea, lots of time and cost have been invested in controlling and managing the transport demand increased very quickly. However, the average travel speed of urban road networks is still staying around 20 kilometers per hour. Thus, another investment is now being issued, which includes road diet, pedestrian passages, bicycle roads, and so on. Here, let us take a better option for the urban transport policy in developing countries. It might be a paradigm shift proposal in changing our way of thinking. Higher speed in the city would be no longer the best goal for the urban transport policy. As we know, in developing countries, there are many difficulties in expanding supply of road networks financially and physically as well. At the very early stage of investment plan for developing countries, we'd better to propose a slow but smoothly flowing and safe road concept. However, at minimum level, the public transport network and arterial trunk roads should be developed for a fast mobility infrastructure, making them to be harmonious with a slow mobility. Here is one of trials for a good example of urban mobility policy in Grenoble city in France. Grenoble city has launched their harmonized mobility project started from the last January. The maximum speed limit is set up to 30 kilometers per hour in almost the urbanized area. The limit of 30 kilometers causes a delay of 18 seconds per kilometer. However, it is expected that the number of deaths caused by traffic accidents could be decreased to 1/9. And they are promoting mobility integration services with electric mini car sharing system and the existing tramway lines, which are the main public transport network in Grenoble city. As it leads to a reduction of the use of private cars, it alleviates chronic traffic congestion and decreases greenhouse gas emission. Furthermore, it provides a much safer environment
to general citizens, including pedestrians and bicycle users. Why not these kinds of policies for developing countries? For now, for today. In closing, my topic might be considered for low cost and high effective alternatives on transport investment for developing countries. Actually, these subjects are also being actively handled for research items in my institute for improving Korean national transport system. My Institute of Koti has about 330 researchers and staff in all transport fields, such as highway, railway, urban transport, aviation, logistics, transport database, and transport technologies. I hope we could share our expertise and experiences with all of you together in order to globally improve urban transport system and to develop transport policies. Once again, I'd like to express my sincere gratitude to the Ministry of Urban Development and the Institute of Urban Transport for organizing this conference and giving me a good chance to speak here as well. Thank you very much for your attention. Thank you. थैंक यू सर। अर्बन मोबिलिटी में ट्रैफिक कंजेशन भी एक अहम पहलू है और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी ने एक ऐसा नया आयाम बनाया है। उन्होंने निर्णय लिया है कि उनकी पूरी कॉन्वॉय जो है, उनका काफिला जो है, वो हर ट्रैफिक सिग्नल पर आम जनता के साथ रुकेगा। यातायात नियमों का पालन कर कंजेशन को सफलता और सरलता का प्रयोग अर्बन मोबिलिटी में देने वाले पारदर्शिता, निर्णायकता, संवेदनशीलता और प्रगतिशीलता के 4 स्तंभ पर सुशासन की कमान संभाले हुए यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी से आइए निवेदन करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित हमारे केंद्र के शहरी विकास मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी, गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय नितिन भाई, साथी मंत्री वल्लभ भाई बगासिया, ईश्वर भाई पटेल, कोरियन ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट चांग वोन लिन, भारत सरकार के सचिव श्री राजीव जी, सचिव श्री मिश्रा जी, एससीएस पीके परमार और हमारे मेट्रो के सीईओ आईबी गौतम जी, उपस्थित भाई और बहनों, पहले तो उपस्थित सभी लोगों का गुजरात की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गुजरात गांधी, सरदार मोरारजी भाई, नरेंद्र भाई जैसे सपूतों की भूमि है। व्यवहार कुशलता, व्यापारिक वाणिज्य, उद्यमशीलता ये गुजरातियों के ब्लड में है। इसी कारण गुजरात का सर्वांगीण विकास बहुत तेजी से हुआ है और अब दुनिया भी उसकी चर्चा कर रही है। गुजरात उर्वा भूमि है, इसलिए विविध प्रांत प्रदेशों के ज्यादातर लोग यहां रोजी रोटी और व्यवसाय के लिए आती है। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का हब बना है और एमएसआई
एमएसएमई सेक्टर गुजरात को बड़ी रोजगारी का माध्यम बना है। इन सारी सफलता के परिणाम स्वरूप गुजरात में व्यापक शहरीकरण हुआ है और राज्य के करीब 45% आबादी अब शहरों में रह रही है। वाइब्रेंट समिट 2070 की तैयारियां अभी भी पूरजोश से चल रही है। प्री वाइब्रेंट समिट के रूप में स्टार्टअप समिट, इनोवेशन इन एजुकेशन समिट, हेल्थ समिट आदि सेमिनार आयोजित करके गुजरात में एक बड़ी वाइब्रेंसी का वातावरण अब खड़ा हुआ है। अर्बन मोबिलिटी के यह कॉन्फ्रेंस में इस दिशा में एक कदम और हम आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के कारण खरीद शक्ति भी गुजरात की ज्यादा है और आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्येक नागरिक अपना व्हीकल खरीदकर यातायात के माध्यम के तौर पर उसका उपयोग पसंद करते हैं। एक अनुमान है कि गुजरात में 2 करोड़ 10 लाख व्हीकल्स अब रजिस्टर हुए हैं। इनमें 2 व्हीलर्स 1 करोड़ 42 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके साथ ही गुजरात में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसके कारण उपयोग का भी प्रमाण यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा है। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में भी गुजरात ने कई कदम उठाए हैं। महानगरों ने, स्थानिक निकायों ने भी अपने द्वारा परिवहन की भी सुविधा की है। साथ ही छोटे छोटे शहर में भी परिवहन की व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। निजी वाहनों का उपयोग व्यावसायिक स्थल पर आना जाना पहुंचने में सुविधा सफल और तुरंत ही वो करते हैं। इसलिए पीक आवर्स में भी ट्रैफिक जाम हो जाता है और बड़े शहरों में ये ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या अब धीरे धीरे बन रही है। जिस तरीके से जो पिक्चर्स दिखाए तो बड़े बड़े शहरों में शाम को ये ट्रैफिक जाम का दृश्य भी यहां धीरे धीरे शुरू हो रहा है और वाहनों की संख्या में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है पिछले दशक में, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट दीर्घकालीन विषयों पर निवारण के लिए ये अर्बन मोबिलिटी सार्वजनिक परिवहन का व्यापक उपयोग कैसे किया जाए और उसका चिंतन भी गुजरात में अब हम शुरू कर रहे हैं। भारत सरकार ने श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी का जो नया कंसेप्ट विकसित किया है, उसमें अर्बन मोबिलिटी का भी स्थान महत्वपूर्ण है। आज केंद्र सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से अर्बन मोबिलिटी के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और नरेंद्र भाई की प्रेरणा से पहली बार यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली के दायरे के बाहर आयोजित हुई है और इसकी मेजबानी का सौभाग्य गुजरात को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आभार व्यक्त करता हूं और हम अपने गुजरात को भी सौभाग्यशाली मानते हैं। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख के अंतर्गत आयोजित किया गया ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो एक ऐसा वार्षिक कार्यक्रम है कि जिसमें शहरी मोबिलिटी के प्रत्येक पहलुओं पर संबोधन, विचार, विमर्श, चिंतन यहां होगा। गुजरात भी अर्बन मोबिलिटी में मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश में नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। अर्बनाइजेशन में मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रॉब्लम नहीं बल्कि डेवलपमेंट स्ट्रेंथ और सातत्यपूर्ण विकास का चालक बल कैसे बने, इस दिशा में गुजरात ने नया आयाम भी अपनाए हैं। मेट्रो लिंक और गांधीनगर एवं अहमदाबाद मेगा प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। त्रुटि रहित कनेक्टिविटी और वैश्विक स्तर की ढांचेगत सुविधा
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नागरिकों को करने की हमारी प्रतिबद्धता है। अहमदाबाद के बाद सूरत ने भी मेट्रो रेल की डीपीआर का कामकाज अब शुरू कर दिया है। टूंक समय में हम डीपीआर प्रेजेंट करेंगे। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बीआरटीएस में भी हमने काफी काम किया है और इसके कारण भी नेशनल अवार्ड का भी एक्सेलेंसी से नवाजा भी गया है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट में भी बीआरटीएस का सफल प्रयोग हमने किया है। सेप्ट यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग कर अर्बन ट्रांसपोर्ट के सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी की स्थापना भी की है, जो देश के अन्य राज्यों को बीआरटीएस की बेस्ट प्रैक्टिस के साथ ही बीआरटीएस सिस्टम के लिए भी सहायक हो रही है। अब एशिया अफ्रीका के देशों को अर्बन ट्रांसपोर्ट मैनेजरों का ध्यान भी बीआरटीएस की सफलता पर केंद्रित हुआ है। पीपीपी मॉडल के तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के गुजरात के मॉडल को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। इसमें बीआरटीएस का भी गौरवशाली स्थान है। शहरी परिवहन की व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य पर्यावरण में भी स्थायित्व है। गुजरात देश का ऐसा अग्रणी राज्य है कि जहां की 100% शहरी सार्वजनिक परिवहन सीएनजी युक्त है और राज्य में पर्यावरण सीएनजी युक्त वाहनों को सीएनजी गैस की उपलब्धि कराने के लिए 370 सीएनजी फिलिंग स्टेशन भी हमने उपलब्ध कराए हैं। नरेंद्र भाई मोदी के अनुसार वैसे भी गुजराती सिंगल फेयर और डबल जर्नी में विश्वास करने वाले लोग हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने निजी वाहन के बजाय ऐसे अर्बन मोबिलिटी के मोड का अधिकतम उपयोग करते हुए ट्रैफिक का बोझ घटाने में, वाहनों को ईंधन से होने वाला प्रदूषण को रोकने में भी सामाजिक दायित्व गुजरात अदा कर रहे हैं। डीएमआईसी, डीएफसी और धोलेला एसआईआर जैसे प्रोजेक्ट और दहेज घोघा रो फेरी जैसे फ्यूचरिस्ट डेवलपमेंट के विजन के साथ नया गुजरात कोस्टल कल्चर पर भी समृद्ध हो रहा है और इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। गिफ्ट सिटी और टूरिज्म ऑटो हब जैसी गुजरात की कई नई इको ट्रांसपोर्ट सिटी के से अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ का मिशन मोड गुजरात ने अपनाया है। गुजरात सरकार ने भी सचिवालय की आंतरिक परिवहन सोलर पावर से चलने वाले स्वच्छ ऊर्जा वाहनों की भी व्यवस्था की है। सातत्यपूर्ण शहरी मोबिलिटी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अहम कदम हमने साबित किया है। आज सड़कों पर कैसे बोझ घटे और कार्बन कैसे कम बने रहे, वो गुजरात भी उसका संशोधन कर रही है और ट्रैफिक की समस्या को कैसे ये हल किया जाए और आज नहीं तो कल ये मास ट्रांसपोर्टेशन पर ही हमें जाना पड़ेगा। और आज मैं मानता हूं कि कोरिया का ये जो प्रेजेंटेशन ये हमें अच्छी दिशा दर्शन देंगे और इसके आधार पर आने वाले दिन की जो चैलेंजेस है ट्रैफिक मैनेजमेंट, उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में भी ये रोड सेफ्टी उसकी काउंसिल बनाई है। कम से कम एक्सीडेंट और डार्क जोन, डार्क स्पॉट, उसको भी हम निकाल रहे हैं। तुरंत अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन और कम से कम एक्सीडेंट के साथ मानव जिंदगी कैसे बचाया जा सके, उसका भी हम प्रयत्न ट्रैफिक रोड सेफ्टी के आधार पर हम अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक ट्रैफिक सेफ्टी काउंसिल भी बनाई है और इसके आधार पर भी ये रोड सेफ्टी का भी गुजरात ने एक नया कदम उठाया है।
मैं मानता हूं कि गुजरात वाइब्रेंट समिट गुजरात में संतुलित विकास, सभी चैलेंजेस को कैसे पार करते हुए गुजरात आगे बढ़े, इसके बारे में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और आज मैं मानता हूं कि ट्रांसपोर्ट की समस्या में ये जो समिट, प्री समिट बन रहा है, उससे भी बहुत मार्गदर्शन मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्गदर्शन में, उनकी मदद से आने वाले दिन में गुजरात ट्रैफिक में अच्छी तरह से काम हम करना चाहते हैं। और आप सभी लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन से एक ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने में गुजरात आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास भी देता हूं। फिर से इस समिट में आए हुए सभी लोगों का इस गुजरात की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके ऋणी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। Under the Sustainable Urban Transport Project of Ministry of Urban Development, a knowledge management portal, that is KMC, has been developed. This is a learning repository of information, database, news and updates that can be utilized by the stakeholders such as governments, businesses, consultants, academia, citizens, policy makers, industry, consultancy and research community working in the domain of urban transport. We would now invite Honorable Minister Urban Development to please launch the Knowledge Management Center. और अब आदर के साथ आमंत्रित करते हैं शहरी विकास मंत्री महोदय माननीय श्री वेंकैया नायडू जी से आपके अभिभाषण हेतु। गुजरात प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी, उप मुख्यमंत्री अनुभवी श्री नितिन भाई पटेल जी, श्री शंकर भाई चौधरी जी, श्री वल्लभ भाई बगैसिया जी और मिस्टर चांग वू ली, प्रेसिडेंट कोरियन ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, और केंद्र सरकार में मेरे विभाग का सचिव श्री राजीव गाबा जी और डॉक्टर जयंत सिंह, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मेयर्स, काउंसलर्स, technocrats, experts, and guests who have come from different parts of the world and different parts of India, brothers and sisters. I'm extremely happy to be amidst you today to inaugurate this important 9th Urban Mobility India Conference and Expo 2016. Mr. Chang Woo Lee has highlighted the keynote address, the latest facets of development of urban transport system in the world. Now this conference will help us to know what are the best practices available in different parts of the country, different parts of the world, and what is the way forward. I need not explain to you in detail the initiatives that are taken up by this most forward-looking state, Gujarat. The Honorable Chief Minister, Shri Vijay Bhai, has explained about the same. The Government of India, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, is partnering with the states and urban local bodies to facilitate urban mobility in all possible ways. Whether it is the metro, whether it is art buses, BRT buses, or international cooperation, capacity building, we are working in all these spheres. The Prime Minister told all of us, he has given a 3-line mantra. What is the mantra? He said, reform, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पूरा देश में परिवर्तन लाना चाहिए, तेजी से परिवर्तन लाना चाहिए। दुनिया बदल रहे और भारत भी बदलने का सामर्थ्य है, बदल रहे और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। द प्राइम मिनिस्टर हु हैज shown the model of Gujarat to the entire country
is now showcasing India on the world map. Wherever the Prime Minister is going across the globe, the focus is on India. It's everywhere. Earlier, India was looked down upon. Now, everywhere in the world, India is now recognized and respected everywhere in the world. Even the economy also is looking up now. World economy is slowed down. China, the strongest economy, is going negative. The only attractive place of investment, focus of investment in the world is number one, India, now Bharat, thanks to the leadership of Shri Narendra Bhai Modi. Modi ji is not only popular in India, now his popularity is growing across the globe. Wherever he is going, people are saying Modi, 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 Modi. लोगों को आश्चर्य हो रहा है क्या मोदी तो गुजरात में तो मोदी समझ सकते हैं, दिल्ली में समझ सकते हैं, नहीं तो साउथ में भी, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्वोत्तर में, सब इलाके में ठीक है, मगर दुनिया में, अमेरिका में, मैडिसन स्क्वायर में, रशिया में, चाइना में, जापान में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नहीं तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, नहीं तो कुवैत में, दुबई में, जहां भी जाए तो लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी। कारण क्या है? मोदी जी केवल मोदी जी नहीं है, मोदी जी के पीछे जो लोग हैं ना, भारत का लोग, उनके देख के पूरा दुनिया भारत का प्रशंसा कर रहे, थैंक्स टू द टैलेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द इनिशिएटिव ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर टुडे इज द आइकॉन। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर में रिजल्ट भी आने वाले, अमेरिकन इलेक्शन में भी जैसा भारत में नारा दिया ना, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं अब की बार अमुक व्यक्ति का सरकार। ये एक रोल मॉडल, रोल मॉडल। कारण क्या है? 30 साल के बाद एक एबल लीडर, स्टेबल गवर्नमेंट, लीडर विथ करेज एंड कन्विक्शन, a leader who has got the character, caliber, capacity and conduct, discipline, dynamism, dedication and devotion, all in one, Narendra Modi. That is the advantage for this country. That is the greatest advantage for this country. Friends, the country is definitely moving forward, but there are challenges. Urbanization also is moving faster. People are leaving villages and coming to towns because education, employment, entertainment, economic opportunities, enhanced medical facilities are all there in urban areas. लोग गांव छोड़ के शहरी के इलाके में जा रहे हैं, ये तो स्वाभाविक हो गया। मैं भी ग्रामीण विकास मंत्रालय छोड़ के शहरी विकास मंत्रालय में पहुंच गया। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया, मगर इसको एक चुनौती है। अर्बनाइजेशन इज चुनौती है, मगर इसको एक अवकाश के रूप में सदुपयोग करके कन्वर्ट करना, इसके लिए दुनिया भर में जो भी अच्छा एग्जाम्पल्स है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को हम लोग सीखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द इंडियन सिचुएशन। इसलिए मित्रों, हमारा सरकार यहाँ का जो ये कॉन्फ्रेंस का और एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य है लोगों को, अलग अलग प्रदेशों से आए, अलग अलग भागों से आए लोगों को दिखाना, भाई कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वगैरह, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। यहाँ आज का इस बैठक में पॉलिसी मेकर्स, प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, experts, elected representatives from municipal corporations, people from transport industry, various other stakeholders, both internal as well as external, all these people are very much here. This Vichara Manthan, this brainstorming, this interaction will always help us because we have to learn from the others' experiences and good practice also. Everybody, that's right, everybody has to learn, even ministers has to learn. I also have to learn. I always tell the people, first try to learn, not yearn. ये everybody has to keep this in mind. ये हमारा इसी उद्देश्य के कारण से हमारा सरकार ने, हमारा विभाग ने, शहरी विकास मंत्रालय ने, अर्बन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हमेशा करते रहते टू अपडेट द नॉलेज of everybody, every stakeholder. Friends, these urban areas have become engines of growth. How to use them in a more effective area? That's what is if the situation continues like this, there will be congestion in the urban areas. Congestion. There will be tension, no attention. There will be pollution. There will be a lot of problems also. So how do you tackle it? Can you be afraid of it and run away? Or you tackle them in an effective manner, in a suitable manner? The time has come, we have to move from private personal vehicles to public transport. The only way forward is moving towards public transport because the space is the same,
People are increasing, population is increasing, vehicle population also is increasing. अभी विजय भाई बता रहे थे गुजरात में 2 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है और दिल्ली जैसा शहरों में 1 करोड़ व्हीकल है. कितना लोग है उतना व्हीकल है. आजकल व्हीकल और मोबाइल भी एक जन के पास 2 भी है, 3 भी है. कुछ लोग यूज कब क्या करते मालूम नहीं है. फिर भी ये सिचुएशन है. ये सिचुएशन में देयर में भी स्टेटस सिंबल्स बट एट सेम टाइम दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स. मैं अभी बर्लिन होकर आया. बर्लिन जर्मनी में. बर्लिन में मैंने देखा वहां 13% लोग साइकिल में जा रहे हैं. साधारण लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है, अमीर लोग साइकिल में जा रहे हैं. साइकिल ट्रैक है, हर एक शहर में साइकिल ट्रैक है. पेडेस्ट्रियन पैदल पे जाने वाले उसके लिए अलग ट्रैक है और कार के लिए अलग ट्रैक है और बसेस के लिए अलग ट्रैक है. हमारा देश में स्थिति क्या है, इसको सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए. इसलिए स्मार्ट सिटीज में अमृत में हमने कहा पेडेस्ट्रियन लाइन लगाओ, साइकिलिंग ट्रैक्स लगाओ और बीआरटी उसको प्रोत्साहन करो. जहां संभव है वहां मेट्रो इज द लास्ट ऑप्शन. मेट्रो इज द बेस्ट बट मेट्रो इज द लास्ट. द रीजन इज मेट्रो इज वेरी कॉस्टली. देखने में अच्छा लगता है, सफर करने में अच्छा लगता है. मैं अभी जाता हूं ना रात को मेट्रो से ही वापस जाता हूं. हमेशा मैं जहां से भी बाहर से दिल्ली आता हूं मैं मेट्रो से जाता हूं. कारण क्या है भाई, गाड़ी में बैठ गया तो बीच में पोल्यूशन होता है, टेंशन होता है, अटेंशन कम होता है, कभी कभी नाराज आता है. किसके ऊपर? हमारे ऊपर. हमको ही नाराज आना और कोई मतलब नहीं, किसी को दोष नहीं ठहरा सकते आप लोग. तो नहीं तो मैं मेट्रो में बैठता हूं, 17 मिनट में 18 मिनट में शिवाजी स्टेडियम पहुंचता हूं. नो टेंशन, ओनली अटेंशन. फाइल देखता हूं, जो भी देखना है तो देखता हूं, सोचना है तो सोचता हूं और सीधा जाता हूं मीटिंग में. मगर कॉस्टली है. तो इसलिए पहले साइकिलिंग, फिर बाद में बीआरटी. पेडेस्ट्रियन, साइकिलिंग, बीआरटी, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए. मैं अभी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं. आने वाले दिनों में हम लोग इनलैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए. बिकॉज वो बहुत सस्ते हैं और उसमें पोल्यूशन भी नहीं है देश भर में. इसलिए केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इनलैंड ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं. हमारा मित्र श्री नितिन गडकरी जी उसी लाइन पे देश पर उसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं. नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी was made out in 2006 for efficient urban mobility, focusing on public transport and non-motorized transport modes, particularly walking and cycling should figure quite prominently in the urban transport system. Mobility is the most dynamic factor for the city's economic growth. मैं आज सुबह बता रहे थे स्मार्ट सिटीज में ऐसा इलाका होना चाहिए, कुछ इलाके में जहां मोटर नहीं जाए, लोग केवल पैदल से जाए, मार्केटिंग करे, आइसक्रीम पी खाए, वहां कुछ वो भी आपका जो पसंद का चीज है वो सब खरीद करे, एंजॉय करे और आके फिर बाद में पार्किंग इलाके में जाके गाड़ी में बैठ के जाए. हम लोगों को अंत तक गाड़ी में जाने का मन है. कुछ लोगों का शॉप में भी अलाउ करे तो वहां भी अंदर बैठ. उसी कारण से देश में हमारा स्वास्थ्य के बारे में भी सोचिए. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फिजिकल मोबिलिटी ऑल न्यू डिसीजेस आर कमिंग. That also is another major challenge. Keeping that also in mind, even the change of lifestyle is required. Pedestrian ways are required. Cycle tracks are required. And then BRT. Gujarat is the state where the BRT experiment has become very successful. I compliment the Gujarat government for the same. There are about 580 kilometers of BRT is under various stages of development across 14 cities, which about 230 kilometers is operational in 8 cities, Ahmedabad and Rajkot, Surat, Indore, Bhopal, Jaipur, Pimpri-Chinchwad and Pune. They are the pioneers. Ahmedabad, Janmarg is the largest BRT network in operation with daily ridership of 1.25 lakh. Ministry committed a central assistance of about 2,600 crores and about 1,600 crores have already been released. This is the model, BRT model. Friends, then as I was talking about metros also, most efficient system, most beautiful. Metro is the flavor of the season, but there is a reason for the same. It consumes 3 times less energy than buses and 21 times less energy than cars. As of now, 325 kilometers of metro rail is in operation in the country in major cities, national capital of Delhi region, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Jaipur. About 517 kilometers of metro is under construction.
Another 449 kilometers is under planning stage. Ministry of Urban Development till date has provided an assistance of about 65,000 crores for various metro rail projects in India, which include the sovereign loan also. A total about 380 kilometers of rapid rail transport system, RRTS, to connect Delhi with Meerut, Panipat and Alwar is under active consideration of the ministry, because this is also another way of transport, rapid rail transport system, RRTS. Friends, even with regard to Ahmedabad also, with regard to Ahmedabad Metro Rail Project Phase 1 is consisting of 2 corridors with a total length of 35.9 kilometers, namely North-South Corridor, APMC to Motera Stadium, 15.42 kilometers, and East-West Corridor, Taltej Gam to Vastrai Gam, 20.54 kilometers at a total estimated completion cost of 10,773 crores. Cabinet has approved Ahmedabad Metro Rail Project in its meeting on 18/10/2014. Sanction letter was issued on 17/11/2014. The scheduled date of completion of the project is March 2018. By March 2018, on April 1st, not 1st, on April 2nd, you can travel by metro in Ahmedabad. The project is being implemented through joint ownership of SPV, Special Purpose Vehicle, of Government of India and Gujarat Government, namely Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad Mega Company Limited. Loan agreement of this project with JICA, Japan, is helping us in a big way, signed on 4th March 2016 for rupees 5,680 crores. So far, total amount 552.26 crores has been released to Mega for implementation of this project. Execution of civil works have been started, and physical progress so far is 15.65%. I hope in the coming days they will expedite it further and then live up to the expectation of the Gujarat type of governance and speedily complete the same. Friends, we are also planning to bring a new metro rail policy. This will be intended to bring in more innovative models of implementation, enabling provision for private participation, appraisal framework, increased standardization and indigenization to induce increased competition and reduce cost, and usher in comprehensive approach towards integrating metro with overall mobility needs in urban areas. You have seen in the presentation also how Korea is moving forward. Presently, metro projects are governed by 2 central acts. One is Metro Railways Construction and Works 1978 Act, Metro Railways Operation and Maintenance Act 2002. It is felt the new Metro Act, which would combine provisions of above acts and make it simple, should be enacted. We are moving in that direction. And we also want to allow PPP model, public-private partnership model. There is no way, because it requires huge amount of investment, and investors are ready to come and invest. Nothing wrong in going private. Some people, they try to criticize us. प्राइवेट को दे रहे हैं सब लोग प्राइवेट मैंने कौन है भाई? पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहते हैं आप, चाइना से बिजनेस कर रहे हैं और पूरा दुनिया को जाके बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए, मगर अपना देश में, अपना प्रदेश में, अपना गुजरात में अपना प्राइवेट वालों को अलाउ नहीं करते और मजाक उड़ाते। पार्लियामेंट में भी कुछ लोग ने मोदी जी का जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है ना, उसको सहन नहीं कर पा रहे। बीच में कुछ लोगों ने कहा ये सरकार कारपोरेट का है, रिच वालों बड़ा बड़ा उद्योगपतियों का है। क्या उद्योगपति होना कोई पाप है क्या? और एक दिन खड़े होकर कह रहे हैं ये तो मोदी सरकार, अदानी अंबानी, हाय 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 हाय। ऐसा मैंने एक दिन देखा, दूसरे दिन मैं खड़े होकर कहा अरे भाई अदानी अंबानी आपका मेहरबानी है, मोदी का मेहरबानी नहीं है। मोदी जी आए केवल 2 साल हो गए, अदानी का उम्र क्या होगा? 2 साल है क्या? बच्चा है क्या? अंबानी का उम्र क्या है? किसका जमाना में अंबानी अदानी यहां तक पहुंच गया? अच्छा है, इसमें कोई गलती नहीं है। We never think that doing business is wrong. There are some people in this country, some parties, which are all suffering with that Soviet model of socialism mindset. They always try to criticize private people. We want public-private partnership. They condemn the business in the morning and do business with the businessman in the night. We don't do that. हम लोग जो भी करना हो दिन में करते। हमारे पास इतना हिम्मत है
इसलिए मोदी जी के जमाना में 1 साल में 2 साल में, अभी तो ऑलमोस्ट 2.5 years हो रहे हैं, 2 साल में नो स्कैम, नो स्कैंडल, एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। तो कोई भी उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है, कोई उंगली उठाने की स्थिति में नहीं है। कारण क्या है? एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग इज थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस, नो फेवरिज्म, no out of the way going to anybody, and no leakages and no packages also. No leakage and no package. Everything is transparent, everything is auction, coal auction, 2G auction, 3G auction, जो भी G आएगा auction, और जो पैसा आएगा प्रदेशों के हित में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 42% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मनी इज गोइंग टू गो टू द स्टेट्स, 42%, 5% to municipalities and panchayats, 2% to natural calamities, 50% of the central government money given it to the states, because the Prime Minister feels the states know the priorities, states know the better, and he wants the state and center to work together, cooperative federalism. That is the conviction of the Prime Minister and the conviction of this government. We want to take the states forward. If the country has to go forward, Gujarat has to move forward first. Andhra Pradesh has to move forward first. That is the philosophy of this government. वो राजनीतिक रंग देख के किसी को मदद करना नहीं करना ऐसा करते नहीं। कोई भी हो, अब कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, वो जितना भी हो, कम हो गया वो तो अलग बात है, कितना भी हो, मगर साथ लेकर मिलकर जाना, साथ लेकर मिलकर जाना। राजनीति चुनाव के संदर्भ में देखेंगे उस समय, मगर अभी विकास के संदर्भ में कोई राजनीतिक भेदभाव दिखाने का सवाल ही नहीं है। मित्रों, मेरा कहना यह है, हम लोग रोलिंग स्टॉक एंड सिग्नलिंग आर द 2 major components which are imported. Hence, standardizing the broad parameters of these 2 systems will have the maximum impact on indigenization. Prime Minister also has given us another mantra, MISI-DC program. MISI-DC. MISI-DC is the name given by me. Program is given by the Pradhan Mantri ji. What is MISI-DC? MI, Make in India. SI, Skill India. DI, Digital India. CI, Clean India. That is MISI-DC. Prime Minister has given that program to all of us, so we want to focus more on indigenous manufacturing. I just went around the exhibition. Some of the people told me, sir, this is being manufactured here. This factory is coming up in Vadodara. This is coming up in so-and-so place. I felt very happy because the Indian people, they have all the intelligence. But there was no encouragement earlier. Now the encouragement also is coming. That's why we are moving ahead. Friends, with regard to the buses also, funding of the buses, our ministry, 22,500 buses have been sanctioned to 157 cities across the country, which is more than 18,200 buses are already operational. Ministry committed a central assistance of about 3,200 crores, out of which 2,750 crores have already been released to state governments also. In the absence of adequate public transport in any Tier 1 or Tier 2 cities, use of motorized private vehicles is increasing, as is evident from the growth of the motorized personal vehicles over the years. We have to bring the cost of those vehicles down. I just now saw Tata electrical vehicle and also Force company ka bhi, aur bhi kuch examples hai. City to city, small cities, you need to have motorized transport. You should not allow more and more cars to come and then add to the traffic. The friends, during the 2001 and 11, the growth of registered motor vehicles have been much faster at the rate of 10% per annum. In 6 largest cities in India, Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru and Hyderabad, the growth of vehicle is astronomically high, registering 8 times growth than the population growth. Population से भी vehicle का growth बढ़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए. One way you can say economy is growing fine, but at the same time problems are also coming. The rapid increase in the total number of registered vehicles have resulted in huge traffic risk, traffic jam and road accidents also. Nearly half of those who die on the roads are pedestrians, cyclists and those traveling on 2-wheelers. Current statistics show the number of road accidents translate into one accident every minute, and this further translates into one road accident death every 4 minutes. The majority of the crashes causing fatalities or major injuries are preventable if transport policies truly prioritize moving people over moving cars. Roads should not be allowed to turn into traffic death traps. In both the flagship programs of Amrut and Smart Cities, we are giving more emphasis on public transport and on non-motorized transport, walking and cycling for the road safety and security measures. You also need to have some regulations.
सम पीपल आर सेइंग फ्रीडम क्या है, हमारा फ्रीडम खत्म हो रहा है. कहाँ और फ्रीडम? इस देश में फ्रीडम नहीं है तो और कहाँ है जी? पूरा दुनिया में देखे तो भारत में जितना फ्रीडम है उतना फ्रीडम और कोई देश में दुनिया में नहीं है. आप लोग देखते भी होंगे इतना फ्रीडम है इस देश में. आप कुछ भी कह सकते, कुछ भी लिख सकते. और कुछ लोग कह रहे सर सरकार कौन होता है रेगुलेट करना? रेगुलेट नहीं करेंगे ना. अभी मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग के बाद आप सब लोग बाहर जाएंगे. फ्री इंडिया है, फ्री गुजरात है. आप जाएंगे उस तरफ, वो आएंगे इस तरफ, दोनों एक दूसरे से टक्कर करेंगे, फिर बाद में मिलेंगे ऊपर. कुछ रेगुलेशन होना चाहिए ना. कुछ ट्रैफिक जाम अवॉइड करने के लिए वन वे ट्रैफिक होता है ना, वो तो रेगुलेशन का जरूरत है. मगर वो रेगुलेशन साइंटिफिक होना चाहिए. इसमें कोई विवक्षा नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. उतना ही है. अदरवाइज नो प्रॉब्लम बेटर. कुछ लोग ये भी बहस करते हैं देश में फ्रीडम है सर, हम जो भी चाहेंगे करेंगे. भाई लोगों ने कहा कला मैंने आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. किसी ने मुझे कहा सर आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. मैंने कहा नो बाउंड्रीज बट कंट्री हैज बाउंड्रीज. देश के लिए सीमा है ना. तो इसलिए देश का सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए. और कुछ लोग ये भी कहते हैं हम लोग जो भी दिखाना चाहते दिखाएंगे, जो भी करना चाहते करेंगे. अभी आप नंगे नाच करना चाहते तो अपना कमरे में करो, बंद कर में कमरे में. बड़ा पब्लिक रोड में आके करके पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे. और देश का दूसरी देश के साथ जो हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी षड्यंत्र करके our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists regularly. कितना नुकसान कर रहे. उस समय में जब लड़ाई हो रहे तो आप उस समय देश का पक्ष लेंगे और क्या करेंगे? तो मैंने मीडिया वालों को भी कहा वी बिलीव इन टोटल मीडिया फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम, नो प्रॉब्लम. क्रिटिसाइज प्रधानमंत्री. आपने कहा ना प्रधानमंत्री को खून का दलाल, तो फिर भी कुछ हुआ नहीं ना, किसी को कुछ किया नहीं. प्रधानमंत्री को कुछ कहा, ये लोग बहुत कुछ कहा इन लोगों ने. प्रधानमंत्री को कुछ लोगों ने नपुंसक भी बोला. उनका अनुभव कब हुआ मुझे मालूम नहीं है. ऐसा लोग कहने वाले लोग, ऐसा बेकार लोग इस देश में कुछ लोग ऐसी है. और वो भी कहने वाले कोई मामूली व्यक्ति नहीं है. इस देश में इतना फ्रीडम है जी. एक महान भाव ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर गया मानो कल मर गए तो मानो परसों अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो जाएगा. उनका मन का इच्छा है. वो प्रधानमंत्री ऐसा मरने वाले नहीं है. ये देश को पूरी तरफ शक्तिमान बना के आगे ले जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी. इसमें उनका स्वप्न कभी साकार नहीं होगा. उसको आकार भी नहीं मिलेगा, प्राकार भी नहीं मिलेगा. वो बेकार हो जाएगा निश्चित रही. मगर लिखने में कोई प्रापत्ति नहीं. प्रधानमंत्री को सरकार का आलोचना करो मगर देश का आलोचना मत करो. देश का फौज का आलोचना मत करो. डोंट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. डोंट portray negatively the forces which are fighting for the sake of the country. At that height of Himalayan heights, in chill winter, they are fighting for the country and you try to ridicule them. ये अच्छा नहीं है किसी के लिए. इतना ही. अदरवाइज हमको क्या प्रॉब्लम है? लोकतंत्र है. जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, जो करने वाले करते रहेंगे. We do whatever we have to do and the country is moving forward. Don't worry on that account at all. There is total freedom in this country. Friends, the non-motorized transport is a viable alternative mode of mobility. Would be effective if there is a close relationship between work and living place. So planning housing भी आने वाले दिनों में work place and living place, they should be nearer comparatively. And the modal shift from private cars to metro rails have proved that given an acceptable or alternative, people would shift to public transport. People are ready to go for public transport provided if there is an opportunity. Mixed land use, compact and dense development as stipulated in the National Mission as Sustainable Habitat will ensure success of public transport system in the city. See how the Ahmedabad has been transformed. Surat, how it is getting transformed. So there are many models, and model building bylaws also are being changed now, and then ease of doing business, and then keeping our culture, future. They should also always, everybody should remember our ancient traditions and our culture. So culture and then nature for better future. That should be thinking of all the planners. Planners should keep that urban mobility issues cannot be resolved just by building bigger roads, flyovers and other infrastructure, rather than they should give due credence to travel demand management as envisaged in the National Urban Transport Policy. So friends, we have to promote the intelligent transport systems have to be promoted on a wider scale for efficient mobility. There are
enough examples of best practices available in the country which could be adopted by adjustment with the local conditions. Green Urban Mobility Scheme. The Government of India is exploring the possibility of bringing out we are exploring the possibility of bringing out a Green Urban Mobility Scheme. That is under preparation. To promote urban mobility initiatives other than metro rail projects, this scheme cover inter-area sustainable urban mobility projects such as footpaths, cycle tracks, public bike sharing, bus rapid transit systems, intelligent transport systems, and urban freight management. Public transport systems based on sustainable vehicles, fuels such as electrical vehicles, non-fossil fuel-based buses, low-carbon projects should be encouraged in the coming days. It is estimated the total budgetary support required for the Government of India over a 5-year period will be around 25,000 crores. But we are now discussing the problems on that count. We will also have the benefit of international best practices. Just now you heard from our guest speaker, our Korean friend, and similarly there will be other people also who will be speaking. My ministry's aim is it will act as a catalyst to provide safe, clean, comfortable, reliable and quick public transport that is people-oriented transport system. Transportation in India lies in sustainable mobility and eco-friendly alternatives. Smart city has to have a smart mobility, friends. So let us all think on those lines, move forward, plan and move forward. The Prime Minister wants to make this country into a strong and stable and prosperous nation. There is a movement going on in the country. What is the movement? Movement Modi. Modi means not our Narendra Modi ji. Modi means M-O-D-I. M-O-D-I means making of developed India. That is Modi movement that is going on in the country. So let us all join that movement and then take the country forward, learn from others' experience. There is a saying, wise men learn from others' experience and fools learn from their own experience. We are all wise men. I am confident about it. There is no problem on that count. And we are a country of wise people. Let us learn from others' experiences and let us move forward to take the country into a strong and stable nation and make our cities more livable and more lovable. Livable and lovable cities. That should be our attitude, and we must also have eco-friendly policies in our cities. Thank you very much. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind. इसी से इसका जो मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहा हूं. Thank you, sir. We would now request Shri D.S. Mishra, Additional Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India, to propose a vote of thanks, please. Honorable Minister of Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation, Information and Broadcasting, Honorable Chief Minister and the dignitaries on the dais, the delegates of today's conference. Sir, it's my privilege to offer the vote of thanks. We are extremely honored and grateful to our Honorable Minister of Urban Development to be here after his busy schedule and spend so much of time here in launching this 9th Urban Mobility India Conference. He has been a great inspiration and motivation to all of us. He just now announced about 3 things. One, the Green Mobility Scheme, the Metro Policy, the new Metro Policy, and the new Metro Act, which we are working on. Sir, under your guidance and your inspiration, we will be working on various things related to the urban mobility, and for which the next 4 days is going to be very, very important for discussion, learning from across the country and across the world. Sir, we are greatly honored to the Honorable Chief Minister of Gujarat. Sir, you along with Honorable Deputy Chief Minister and the ministers, 2 ministers from the Government of Gujarat, we are here. We are extremely honored with your presence, sir, and with your words. It's going to be highly inspiring to us. Sir, we are greatly honored by the President Koti who is here. His address will also add to the tone and tenor of the discussion which is going to be there for the next 4 days. Sir, we are extremely grateful for the presence of our Secretary Urban Development,
who is here, who has been guiding us for conceiving and working on this kind of a big conference, which is a major challenge, bringing people from all across the country and from different parts of the world. I am very thankful to the various officers of the government of Gujarat who have been extremely nice, who have been extremely helping to us, especially to mention about Mr. Gautam and Mr. Parmar, and the president of CEPT University, various persons from academia who are here, and all those who are going to participate in this. At the end, again, I would like to thank our Honorable Urban Development Minister and our Honorable Chief Minister of Gujarat for gracing this occasion. Thank you. इसके साथ ही उद्घाटन सत्र का यहां समापन करते हैं। दूसरा विशेष सत्र फॉर म्युनिसिपल काउंसिलर्स ठीक 15 मिनट के बाद इसी सेमिनार हॉल में शुरू होगा। आप सबके लिए अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। अल्पाहार के लिए आप सब निमंत्रित हैं।